grade all these things we are discussing today. Okay? I will share my screen at first. I hope you all see my screen. Please let in the chat box if you see my screen as well. Thank you so much. Bye. So I will create a new file inside public folder. Okay, it's like column COLUMN. Okay, I will COL. Okay, HTML. Yeah. Okay. Then so I will give the title name is wait, right. Yeah, multiple column. Okay. So in that multiple column, the CSS like provide various attribute to organize the content into the column without any grid, without any like flex blocks, all these things. So we have like column count and like column bit and column gap and column rule and column span. What is that there? I will return inside that in that like in the comment. Wait. Last one is column WMN count COUNT. Column count means how many like column you want, like five, six, whatever. Next we have column width. What is the width of that? According to your requirement, you have to give column gap. Okay. Next we have column uh, rule. Rule means what is that? If you want to any roll inside that, it's like a line, and whatever this line will be in a dotted form or like a dashed form, then you have to apply the particular. Okay. Next we have span, but basically we are not using the column span. Okay. Column span. These are the span attribute, multiple span attribute. What is the use of that? If you if you read any newspaper in that like every column is divided into like multiple the part. It's like column. Okay, it's like more than five, more than six, whatever. So if I write any like inside that body, if I write div, I will give the class name as container class container. In that container, if I write any content inside that, so if I write content inside that, so at the time I will add the CSS of that using like class. In the head section, you have to write style tag. Inside that, you have to use container. Then inside, I need column count COLUMN like 5. I will open that particular file in an open Slack server. Let's see what's happening or not. Okay, wait 2 minutes.
Yeah, it's opening now. Wait a minute. What happened? Yeah, it's opening now. Okay, have you observed that one? It will be divided into five parts. Okay, if I change the column count, it's like column count, it's like six and whatever. Then according to your requirement, you have it will be changed. Okay, then next we have column width. What is column width? Like if you want to column increase the column width, you can. It's like column width, like 50 pixel and whatever pixel. Let's see. That one is 50 pixel. If I change that one, it's like 80. Wait a minute, I will change something big. 150. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. If I use 250, let's see what happens. It's not changing. Okay. Wait, I will check. What happened. If I use any particular like 7, 8, whatever, let's say. Yeah, 1, 2, 3, 4. I will give them 8, but 5 it's like 4. Have you observed one? 1, 2, 3, 4, 5? Because I will give that particular bit column width is 250 pixel. That's why it adjusted according to that whatever I written inside that class. Okay, CSS. Next we have column gap. Column gap is represented by that is space between that two column gap. Okay, it's like 50 pixel if I write that one. Let's see. Okay, that's 50 pixel. If I change that particularly, it's like 80 pixel. Okay, it's increase. If I change that one, it's 10 pixel. Okay, 10 pixel. Next we have column rule. Column ruler you have to call it. Okay, rule. It's like dotted. Have you observed that one? Okay, it's like in dotted form. If you want to dash from, you have to write dash. If you want to in line form, you have to write by using that border. Okay, whatever. So this one we are using for like multiple column.
If you any doubt regarding, you can ask me. Next we have to go to that position display. Wait. At first we are discussing our display, then we are discussing position. Okay. So in the display option, CSS display, it is used to configure the display of the element. We are using that attribute, it's like display, in that whatever value you want to like inline block whatever. I will show you what are the like values that in that particular CS attribute. I will written inside the comment, then you have to understand better. Wait, this one is that multiple column. Wait, yeah, multiple column. Okay. So next one we have display, CSS display. Then in that CSS display we have inline, inline, we have block, we have grid, we have flex, and we have flex and none, and initial like inheritance. All these things are there also. Okay. So basically, if you want to responsive designing, then you have to, instead of that you have to use grid and flexbox. We are discussing like deeply inside that what is flexbox, how we are using that, and what are the like attribute we are using for that, and how we are doing like the page will be responsive by using flex and grid. But basically we have in the display inline, block, grid, and flexbox is there. Let's see where we are using that particular inline, block, and like grid, flex. I will show you. I will write inside that if I require UL, inside the UR, if I at home, wait, apply and contact, we have register, like login, whatever content you need, you have to write. Okay. In that it's display, but I need to wait a minute. I will that comment this one also. Okay. And next, if you want that like home, contact, and like register, all this login like navbar option will be displayed in the one line. So at that time you have to use like display flex or all these things. Let's see if I using like UL, inside that UL, if I using display flex, it will be displayed in that one line. Okay. If I using inline, inside that inline, let's see what happen. It is in that form. Okay. Like one another one. If I using block, same. Okay. Inline block, we have inline block also there. Okay. And we have none option. Have you observed that one? And the none option is there. If I using grid, no changing is happening in that. Let's see grid, same. Okay. So if I using none here, the content will be not displayed inside that page. Okay. If you want to, if any content you don't want to display in particular time, so at the time you have to use display none. Okay. So have you,
in the previous you have to observe that one, like when I use like flex and inline block and whatever I using according to requirement, you have to use the particularly. Okay, if you are designing a nav bar, so by using like li list item, then you have to list item always will be written inside that one by one, so it will be in the block form. If you want in the flex box, then you have to use display block flex. Okay, I hope you understand what is the like CSS display attribute are there. Okay. Next, we have discussed more about Flexbox. So, what is Flexbox and where we are using for that? Okay. So, I will open a website. Then, by the diagram, I have to like teach you like how it's work and how it is required for responsive designing. Okay, because if I written inside that particular paint and like inside that uh, Visual Studio, then you may be not understand what is that and where we are using for that. But if I by using diagram, if I teach you, then you have to understand better. That's why I will show you a website. In that we have container. Inside the container we have many items is there. How we are arranging the item, how we are doing all these things, I will show you. Okay? Yeah, it's opening now. Yeah, inside that a complete guideline to Flexbox. Okay, what is that? So this is the Flexbox property. This whole is Flexbox. Inside that is the container. Have you observed that one? It's the first diagram. This is the container. Inside the container, we have different item. Inside the container, we have three item. Each one is an item. Okay. So in that item, if you want to display in the line wise or like into that every item in between that, it require like space, same space or like different space. You have to use according to that. Let's say give an example. If I require a source box and nav bar. Okay, so inside the nav bar, I will arrange my content in the left side, and the source box will be in that right side. So at the time, if you require in between that particular space, and it will be responsive when I open in that particularly mobile and laptop and like any other device, whatever we are using for that, like opening the website and whatever. Okay, so at the time we are using some attribute to display the particularly for given that space. Okay, if in that situation we are using two item, but if you require any three item or four item, whatever, like more than three item, then if you require like even space in between that, then you have to given that. Have you observed that one? In that item, the first item is like first item and like third item is same, it's like width is same, but is the third item is like width is more than that. Okay, so if you require like to designing it particularly in that form, then you have to use flexbox property. Okay, wait 2 minutes. Okay, I hope you understand how like what is that flex property. And in that order we have like display. Wait, I'm show you, this is the container. Okay, yeah. So order, what is order? So have you observed that one? In the order we have 1 1 1 2 3 and minus 1 3 according to your requirement. If you want designing, then you can. So what is flex direction? We have like flex direction. In the flex direction we have like column reverse and row reverse. You know that what is like column, what is row. And in that, if you observe that one, in the column we have column reverse. If like if you want to designing that
the navbar inside the web page. If you are writing something like home, about, contact, and register, but you want to start from that like reverse order, then the last part, the first part is like home, will we start like go to the last part, it's like home. If I write inside that, it's home, contact, register, and login. Then if you want to show that particular content in the reverse order, then it started from login, register, contact, and home. Okay, according to your requirement you have to design. So whatever you are designing using like HTML, CSS, and JavaScript, whatever, uh, in the web page, every web page is divided into particularly in the column and row. If you like imagine a particularly every item is a column, or like in that row form they will be defined. Okay. So what is flex row? Flex row. Let's go. Have you that one? The three item is the same size, but I need the second one is the larger. So in that situation, we are using flex go. Okay. So basically, we have in that flex direction, we have column, column reverse, and row, row reverse. Okay. And we have flex row. What is flex row? Like imagine that if you using like eight item. So if you designing the HTML using HTML, CSS, so in that situation, the every like item will be designing in the particular line, but you don't want to designing the particular line. If you want, like four item will be in the first row, and the second four item in the second row. So by using the flex verb, you can design it. It's no verb and verb is there. So what is that? I will show you also. Okay. And next one we have justify content. What is justify content? Like in that not neb bar, every situation in that you are designing that particular web page, in that particularly you have to use all this attribute. It helping to that responsive designing, or like it is like more responsive and more faster to use that one, and it look like a, if anyone using like mobile, it will be look like very interactive also. Okay. So justify content. We have flex start, flex end, center, space between, space around, space event. What is that? Flex start is that when you want to start from the left side, then you have to use flex start. Justify content, flex start. If you want to start from the end, then you have to use flex end. Okay. If you want to the particular what are the item you have to use, this will be so in that particular in center. Then you have to use justify content center. Inside that, if you want to require a space, then you have to use space between. Space around. What is the difference between space between and space around? You maybe know that, because in the space between, we are given that space in particularly uh, different item, and like whatever right side of the every item. Okay. If I go to the space around, we have it will be counted the left, right, like top, bottom, same like what is pixel, whatever you are unit you are using for that. And we have space evenly. What is space evenly? Because evenly means what are the space you are using for the every item, this will be in that even form. In the same space will be applied every item. Okay. This one is the justify content. Okay. Next we have alignment self. What is that? In that like one item, if you want to in that like second row, then you will have to use that one. Okay. So we have alignment item. The alignment item, we have flex start, flex end, center, and stretch, and like baseline. Okay. By using like picture, you observe that what happening in that particularly using align item. Okay. And we have align content. It's like flex start, flex end, center, stretch, space between, space around. Okay. Alignment content. It's justify content. It's alignment content. Okay. So that is Flexbox. Okay. I hope you understand. Sir, will you also show how to write code for making the website? I don't under what is the question, Bano?
हेलो सर। सर एक्चुअली जो वेबसाइट में इमेजेस जैसे जाते रहते हैं और जहाँ पे हम लोगों को मतलब एक ब्लॉग के नीचे लीव ए कमेंट का जैसा कॉलम आता है वेबसाइट में और आइटम्स जैसे डालते हैं वो सभी लिखना भी आप बताएंगे सर वेबसाइट में बनाने के कौन लिए। कौन सा बोले आपने? सर कुछ वेबसाइट्स में नीचे होता है ना सर लाइक लीव अस ए कमेंट करके कमेंट वो। तो मैं बता दिया ऑलरेडी आपको, टेक्स्ट एरिया यूज करके आपको कमेंट देना है। ऑलरेडी मैं एचटीएमएल में बता दिया आपको कि कमेंट कैसे देना है। अगर कमेंट लिखना है आपको, अगर आप चाहते कि कोई भी क्लाइंट आए और कस्टमर आए, पे कमेंट देके जाए आपका वेबसाइट का और लाइक सजेशन देके जाए, तो नीचे आप टेक्स्ट एरिया यूज करके दे सकते हैं बाय यूजिंग गूगल। एंड ओके ओके सर आई मैं दोबारा चेक करती हूँ शायद मेरे मुझसे मिस हो गया होगा वो। हाँ हाँ, बट सर एक भी था सर मुझे वेबसाइट को लेके लाइक बताओ। मतलब जो हेडर पार्ट में होम अबाउट अस कंटेंट या फिर ब्लॉग ऐसा कुछ भी डालते हैं तो उसके अंडर मतलब ब्लॉग के अंडर सब पेजेस जैसे होते हैं सर तो वो कैसे लिखते हैं सर कोड। हाँ, वो अब हम बूटस्ट्रैप में सीख लेंगे कैसे लिखते हैं, बट ये अगर करते भी हो जाएगा सीएसएस में, बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, ओके तो सीएसएस में, सॉरी, बूटस्ट्रैप में आप सीख जाओगे। ओके। ओके सब सर जो थैंक कि यू। सब मेनू, ओके, राइट। हाँ सर यस। ओके ओके। मतलब मुझे उसके इंडिविजुअली इमेजेस भी ऐड करने हैं सर। आप बोल रहे हैं कि अगर आप जो भी नेप बार होगा, उस नेप बार में अगर होम होगा, होम के नीचे में कंट जैसे कि नेप बार का सब मेनू होगा, राइट। यस यस सर उसके मतलब एक पेज के अंडर सब पेजेस सर। पेजेस नहीं बोल सकते उसको ना, आप नेप बार बोल सकते। नेप बार पेजेस मतलब अलग पेज हो गया ना। तो एक पेज में आप डिजाइनिंग करते हो, ओके। उस यस पेज में अगर क्लिक करते, जैसे कि कोई होम बटन में लाइक नेप बार में क्लिक करते, अगर उस पेज को नेविगेट करता है वो, मीन्स दूसरे पेज को नेविगेट करके वो ओपन होता है, वो वाला बोल रहे हैं आप, राइट। यस सर मतलब उसके अंदर ऊपर मतलब उसके वो होम पेज पे जाने के बाद उसके अंदर फिर जाना हो तो जैसे बनाते हैं ना हाँ तो हाँ, वो मीन्स कोड। अगर आप कोई लिंक को क्लिक करें तो उस लिंक से मदद से वो नेक्स्ट पेज में कैसे जाएगा, राइट। यस सर ओके ओके, वो उस टाइम में सीख लेंगे, ओके। ठीक है सर। Okay, thank you so much. Guys, any other doubt regarding Flexbox, you can ask me. What are the attributes you have to see in that particularly using that image? I will show you that one is in that like practically how we are doing all these things. Okay. Before that, if you have any doubt regarding, you can ask me on that. At first, then I will discuss with you how it's practically we are doing all these things. Okay, one already, yeah. Pratisha ma'am already given that, no doubt, in the chat box. Any other? Okay, yeah, great. It's great. You have to understand. It's like in that picture, you have to understand better. I hope. Okay, so I will designing a website, not a website. I will designing the header part and the footer part and the body part by using like Flexbox. Okay, let's see how. Okay, I will written that inside that Flex has to, okay. Okay. Text box. Done. Next, we have to designing inside the div. Even that I will written that in the class. Its container. What is container? I will define you with that. The container basically we are using for that class container. It's in Bootstrap. We have container Plex. We have container
SM we have container, MD which we have Excel. What is that? Uh, Container SM means container for small. Container MD means medium. Container XL means extra large and large. LG we are using for that the bootstrap. Okay. So basically, still we are not using like any bootstrap CDN link and whatever file required for that bootstrap. But still we are using container because if you practice that much in that before, it will be help you in that. Okay. So we have like container flex also. Flex means by like what meaning you have to observe that one. What is flex? Okay, let's see. I will show you. Next we have div. Inside the div, I will write like class name header. Hidden. So inside the header, I need navbar. It's navbar in that UL. I will copy that one before I will write na home content all these things. It is like call, yeah. Then next we have weapon and we have a body, like we are designing a div inside that. I'll return a content. Okay, so next one I need div like header. It's footer. FOOTER footer. Okay, it's that one. Let's see how it's look, then I will show you. Before that, the whole part I will return inside the div. It's better. Wait, div. Okay, done. Instead of using the class container inside the body, I will return inside the div. Okay, it's the main div. We are not writing anything in that footer and header part, right? I will write something. Is that flex box demo website? Okay. So I need the footer part. It's also wait. It's like at the rate copyright 2020. It's 2021. Uh, if I using flex box copyright, okay, then so I will designing that particularly. So I need to CSS inside that style. Inside that, if I designing container, the whole container, CONTAINER. Okay, done. So display flex. Okay. So flex direction we have column reverse, row reverse. If I using like column, let's see what happen. Nothing. Okay. If I using a row inside that, have you observed that one? It will be converted in the row. This one is the row. The whole content will be shown in that row form. Okay. If I using row reverse, the first one will be come to the last one. It's like flex demo website, and in that navbar we have body section. In that we have footer bar. Okay, but I don't want. I don't need that one. I need column. Okay, that's all. If I using column reverse, this one. Okay, it will be like the footer part will become like at first, then like body part, then navbar part, then like header part. Okay,
but I need color. Then next I will designing the color all these things. Wait, by using header, background color, like coral. It's there. Yeah, I will use coral. Yeah, then but I need some more than that. I'm using universal. What is that? Universal selector. Yeah. Inside that, I will write margin. The whole page will be margin 0 pixel. ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐತೆ Hello. ಜೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ Hello. Who is this? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ. Hello. Hello. Can you hear me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ನೋಡಿ. अभी तक म्यूट है. कौन है? उसका नाम बताओ. Okay. So next one we have to discuss like yeah, in that it's like margin 0, padding I required 0, and border box like box size. Yeah, one thing is box sizing, border box. Let's see. Have you observed that one? What are the space and padding? All these things will be set according to that. Okay. So I need inside the header height 100 pixel, more than that. Wait, I will change that one. Like 80. Done. Next font style I need font size 2em. Wait, em. Then next we have required the text alignment center. Okay, done. If you require any color, right? Okay. So next we are designing navbar session. Yeah, navbar. Inside the navbar. Excuse me, sir. ಹೊರೆ ಐತೆ. Excuse Yeah. me, sir. ಅದೇ ರೈಟ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ तहसीन ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು. Wait, sir, wait, 2 minutes, 2 minutes. कौन है उसको अनम्यूट कर दिया फर्स्ट. ಅವಾಗೆ 45ಗೆ ಇದು जो भी ಇನ್ನ म्यूट ಬರ್ತದೆ. है प्लीज अनम्यूट कर दीजिए. कौन बार बार अनम्यूट कर रहा है? सर मुझे एक डाउट था. हाँ डाउट था बट 2 मिनट वेट करिए, मैं बता रहा हूँ. Sir, actually, it is coming from Banu's side, actually. ओके बानू मैम प्लीज. So she's asking a doubt, sir. ओके 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 यू कैन आस्क नाउ. सर वो जो आपने वेबसाइट से जो थियोरी एक्सप्लेन. या हेलो, आपको आवाज ठीक से नहीं आ रहा है. So someone is unmuting me. Sorry, muting me. I couldn't explain. ओके अभी सर हाँ सर, अभी जो आप जो वेबसाइट रेफर करके आपने जो थियोरी बताया था सर, उसमें बहुत सारे स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए थे. अगर उस तरह से हम लोगों को कोडिंग लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे सर? उसके अंदर में आपको कोडिंग लिखना है क्या? यस सर, मतलब हम लोगों को मतलब जो आपने थियोरी में बता रहे थे ना सर, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस जैसे लगाए थे, मतलब क्लिकिंग टाइप के, तो वो कैसे करते हैं सर? ओके ओके, वो वाला हम डिजाइनिंग ने किए. वो पिक्चर है एक. तो ये पिक्चर के माध्यम में मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो कलम कलम रिवर्स कैसे होता है और ये कैसे काम करता है. ओके, हम वो यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको डिस्प्ले किया क्योंकि इस द्वारा आप अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या होता है और कैसे ये लाइक वर्क करता है. ओके,
सर मैंने ये ट्राई किया था सर, बट मुझसे हुआ नहीं वो। राइट? हाँ, ठीक है सर। भानु मैम, आर यू देयर? यस सर, एक्चुअली मैंने वो ट्राई किया बट वो मुझसे हुआ नहीं। या, हेलो। हेलो। हेलो सर, वो आप मुझे एक बार शो करके बता सकते हैं सर, क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो वो मुझसे हुआ नहीं था। हेलो। सर, am I audible? या, इट्स ऑडिबल। सर, बानो मैम कह रही है कि उन्होंने ट्राई किया था बट उसे हुआ नहीं। आप एक बार उन्हें करके बता दीजिए। कौन सा वाला बता रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं है कि कौन सा वाला बताऊं उनको। आई डोंट नो सर। ओके, आपको तो पता, बताने के बाद ना, इमेज वाला सर वो बताओ तो। फ्लेक्स बॉक्स वाला, फ्लेक्स बॉक्स वाला। ओके, फ्लेक्स बॉक्स का जैसे राउंड वाला होता है ना, जो पिक्चर जैसे कि बॉर्डर रेडियस यूज करके करते हैं, वो वाला, राइट? भानु मैम, आप नोटबुक से चार्ट बॉक्स में आप राइट डाउन कर दीजिए जो भी आप चाहते हैं। सर, फ्लेक्स, या, अगर आप फ्लेक्स बॉक्स का इमेज बनाना चाहते हैं, फ्लेक्स बॉक्स एक जैसे कि हाउ टू एड द वेबसाइट, आप जो बता रहे हैं ना हाउ टू ऐड ए वेबसाइट, तो ये मैं बता रहा हूँ कि फ्लेक्सबॉक्स यूज करके हम वेबसाइट बनाते, जो वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होता है। जो भी मैं वेबसाइट बताऊंगा अभी, देखो यहाँ पे, अगर मैं मोबाइल डिवाइस में ओपन करता हूँ, लेट्स सी, आई विल शो यू। एक फ्लेक्सबॉक्स एक ऑप्शन है, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि कैसे होता है, कैसे काम करता है। ये जो फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर में आइटम था, उसको हम एक पार्ट लेके चलते हैं, क्योंकि हम जो पार्ट बनाते हैं, हमारे हेडर पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, एंड लाइक फुटर पार्ट होता है, उसको एक आइटम मान के चलते हैं हम। ओके, वेट, आई विल शो यू दैट हाउ इट्स लुक इन दैट मोबाइल फोन। वी हैव लाइक गैलेक्सी S5। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लेक्स बॉक्स जैसे कि उसका कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर लाइक विड्थ चेंज हो जाता है। अगर मैं ओपन करूँ किसी भी आईपैड और आईपैड प्रो में, तो अकॉर्डिंग टू योर विड्थ इट चेंजिंग। बट इफ यू यूजिंग एनी without like using flex box, you have to designing it not changing according to your requirement. It will be like more than that. It's like content, all these things will be changing. Okay, भानु मैम, आप जो भी डाउट है मैं क्लास के बाद ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो। ओके, मैं आपको क्लास पे बात बताऊंगा। ओके, या, ओके ओके, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके, guys, any other doubt regarding flexbox, you can ask me, because flexbox is a important concept in that we are designing like flexbox by using whatever you are designing, like for responsive designing, it's mobile device or like iPad or like laptop or like TV, whatever. So according to the bit, it will be changing. So I will show you that picture, not for designing the particularly. I will show you that picture because how it working, and if I want to that more than five list item inside that particular in file, HTML file, then it will be showing that one line. If you want to that particular line, like 10 list item, if you want to show that four is five, one is the like first row and next row will be in five, then you have to use flex, whatever flex attribute is there. By using that, we can do that. So I will show that one by using without using like flexbox, we cannot do that. Okay, so let's see, I will talk in that. Wait, so next we have to header part done mostly. Yeah, next we have li part, it's navbar part. Okay, navbar inside navbar part, it's will be in flex.
Wait, I will show you. It's like if I designing background color, if I designing any particularly, wait, is that one? Let's see. Showing. Yeah. So I need UL nav UL. It's parent child inside that. Okay, the selector. So like flex, display flex. Wait, display flex, and the flex direction will be in that row form. Okay, if I using like row reverts, what happen? You have that one starting from the right side, but I don't want that. A row. Then next, I need of like text list style type none. N-O-N-E. Okay, done. Okay. Next, I need justify content. Justify content space, space around, space between, space evenly there. Okay. If I using space evenly, let's see what happens. It will be same space the first. Okay. If I using space around, okay, it will be around the space. Okay, this one is the around space around. So next one we have what are the start and all these things are there also. Flex and flex start. Okay, this one is start by using and okay. But I don't want that one. I will using that one like space between. Okay, done. If I using any more like li, then you have to you can use that. I will copy something first, then you have to show how it's due. It will be set all like that evenly. Okay. Okay, done. Next, I need all that content. It's like color in a particular color. I need that blue color. Okay, and if you want to apply any like link, then you have to apply inside that anchor tag and href. You have to give that address. All these things you can do that. Okay. Next, I need what is that? If I using more content inside that, done. So next I will designing that head like footer part. Then body part I will specially show you that how we are designing the three part, two part, whatever you want. Okay. At first I'm designing the footer part. Wait. Footer inside that footer OOTR. Wait, I will change that. Value restrict. Wait. Yeah, I will apply the same all these things in the header part. I'll copy. I'll paste inside that. Okay, it's not taking more time. Better. Okay, done. Yeah, but I need the body part will be set according to my requirement. Wait. So beef is like class main. Okay, and the main. Wait, main inside that height 500 pixel. Okay, it's set according to that requirement. If I change like 400 pixel and whatever, you have to use that particular. Okay, done. Next, I want to divide that main section in three parts. So I need. Wait, I will change that one. It's beef. Inside, I will copy that UL part. Okay. Will paste inside that also. Okay. Next, I want the whole like content. I will show in that another beef
Wait, I'll copy and I will designing that one the another div. This one is my main div. Inside we have a class nav, okay, side name and whatever like you can side nav, and inside I need div. Inside the div I will test that my content, and under div is like aside class aside. I will design that one also. It's like write something. Uh, write something. Okay. So this one class name is content. Done. So sidebar we are given. We can divide the multiple. Wait, I will change. Set that. Yeah. It's shown in that format. Okay. I will designing the nav bar, all these things. Then I will show you how we divided. Wait. It's aside. I need aside class name in that aside in that border 1 pixel solid gray, and the height, and I need 50 pixel, and the width I need 50 pixel. Let's see how it's look. I need more than that. If I change width is like 250, yeah, it's done. Mm, that one also I need something bigger, 200 pixel. Yeah, more than that, but I need don't need that. I'll using 150 pixel. It's better. Okay. Next, I will divide that particularly. So in that I need flex direction. What is I need a row, not I need a row. Yeah, column, not column. Column will divide in that one by one part, but I need row. Yeah. See, not working because I will not using any flex display flex. That's what's not working. Yeah. Okay. Done. So that height, all these things I will designing. Wait 2 minutes. Yeah. Nav bar and content. I will design the content. Content class name is content, right? Wait, I will copy that one. It's better. The spelling mistakes occur maybe. Done. Next, I think I acquire the width and height. All these things. Width. It's like 500 pixel. Okay. If you want more than that, then you have to use 1000 or say 8000, whatever you need. Okay. If you require like space in between that, then justify content space between. Okay. And then I will designing what nav bar. Yeah, side nav. Wait, I will designing that side nav. Side nav in that color blue, black, not required. By using green, that's better. And like background color, I need something blanche diamond. I think diamond. Yeah. Let's see. I require more height and width, all these things. If I require more width, then I will defining inside that. It's like 100 pixel. Okay. Uh, you can change that one 300 pixel. Okay. And the content, if you require in the center, then you have to use text alignment center. Okay. Then is the margin if you require margin right, margin. Yeah, margin bottom I require is 20 pixel. What happened?
will be changed automatically. Wait, I will check. Yeah, yeah, done. But I need all these things by using. Wait, I will check that one. Why it's not working? Because every list item I require. That's what's not working. If I give li, wait, side var nev, side nev, inside that li, I require margin bottom 20 pixel. Okay, then wait. Done. I hope you understand how it's look. I will open that one in that inspect and I will check that one it's responsive or not. Okay. Wait. Yeah, have you observed that one? According to your width, it will be 10. Okay. I hope you understand how it's like work and how we are designing all these things. If you any doubt, you can ask me in the chat box as well. So सर yeah, सर मैंने वो कल बैकग्राउंड इमेज का क्वेश्चन पूछा था ना, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे. जस्ट अ मिनट सर, अब आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल सर? Yeah, it's audible. ओके, सो कल मैंने आपसे एक डाउट पूछा था बैकग्राउंड इमेज का, वो अभी पूछूं? हाँ पूछो. ओके सर, जस्ट अ मिनट. Guys, if you any class after that 6 p.m. then you can sorry 7 p.m. you can leave now. Okay, give your attendance in the chat box, then you can leave. ओके सर. सर तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? हाँ यार, सही. सर ये जो इमेज है, ये जो बैकग्राउंड है, ये इमेज मुझे सेंटर में चाहिए. ये इमेज एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट अ मिनट. सर उससे पहले ये वाला डाउट देख लीजिए. Yeah, I ये will जो say you फॉन्ट, that code today. Okay, don't worry. ओके सर, After the class, I will say. ओके सर. सर तो ये जो फॉन्ट ऑसम है ना, ये वाला 4.7 वर्जन है. ओके, एंड ये वाला वर्जन है 5.15. अब मेरा डाउट ये है, मुझे ये वाले शिप चाहिए, मीन्स आइकन ये वाला चाहिए, लेकिन ये वाला शो नहीं हो रहा है. आइकन हमेशा ये पूरा वाला चेक- शो. पूरा चेक किया आपने? यस सर, ये वाला जो है ना फॉन्ट ऑसम, अगर मैं यहाँ पर इसे मीन्स कॉपी भी करती हूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया. ओके, ये वाला आइकन को कॉपी किया, आ रहा है ये वाला. ओके ओके, उसको अपडेट किया गया है ऑलरेडी, क्योंकि जो वर्जन है अपडेट कर जाता किया जाता है ना, तो जो भी 4 जैसे कि आपने बताया कि ये वर्जन है, ये वर्जन, तो वो ऑप्शन को चेंज करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. तो सर ये वाला आइकन मुझे मिलेगा ही नहीं, मीन्स? नहीं, अभी तो अपडेट कर दिए उन्हें, कैसे मिलेगा आपको? अगर तो आप सर- मिलेगा अगर आप यूज करते हैं उसका वर्जन. जैसे कि अगर जो आप सीरियल लिंक यूज किए और जो फाइल यूज किए, अगर आपने उस वर्जन का यूज करते सीरियल, तो आपको हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. ओके सर. सर मेरा दूसरा डाउट, जस्ट अ मिनट सर. ओके. सॉरी सर, जस्ट अ मिनट. सर या हम लोग वो आइकन्स जो इसने यूज करे हैं एक्चुअली मैम ने, तो उसके साइज अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? साइज आप जैसे कि उसके फॉन्ट साइज देके बड़ा हो जाएगा. ठीक है, ओके सर. बाद में आईडी और क्लास यूज करो, यूज करने के बाद जो भी क्लास और आईडी यूज करते हो हाँ, उसके अंदर उसके फॉन्ट साइज अंदर देके बढ़ा सकते हो. ओके सर. सर हाँ बताओ. ये जो बैकग्राउंड इमेज है ना, जस्ट अ मिनट सर, ये वाला एरिया जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो बैकग्राउंड इमेज है, या ये वाली इमेज और ये पूरी इमेज ये है. अब मुझे चाहिए इतना एरिया, मीन्स ये जो सेंटर वाला एरिया है ना, इतना एरिया चाहिए अपनी बैकग्राउंड इमेज के लिए. सो वो कैसे होगा? जो टावर वाले, ऐसे टावर वाले चाहिए और कौन सा चाहिए? जस्ट अ मिनट सर, मैं अगेन कट हाईलाइट. करके मुझे दिखाओ. हाँ हाँ वही, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, सिर्फ इतना सा, लेकिन बैकग्राउंड इमेज में सेट नहीं हो रहा है. आप क्रॉप करके यूज करिए.
एक बार। नहीं सर, क्रॉप करके यूज करूंगी ना फिर भी कुछ स्पेशल एरिया ही आएगा, लाइक ऊपर ऊपर का पोर्शन ही आएगा। सो ऐसा नहीं हो सकता कि इमेज के सेंटर वाला एरिया यूज कर सकूं मैं। या कवर कवर यूज करो, मे भी वो हो जाएगा। ओके, नहीं, कवर और कंटेंट दोनों में नहीं हो रहा सर। तो ऐसे कुछ मैं बताऊंगा आपको, मुझे तो पता नहीं अभी, मैं रिसर्च करके बताऊंगा आपको। ओके। ओके सर। सर वन मोर डाउट। या ये जो हम्म, ये जो हाईलाइट हो रहा है वेयर डेस्टिनेशन, ये शो हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है। तो मुझे चाहिए कि ये जो प्लेस होल्डर में ये जो है ना, लाइक ग्लोब का सिंबल ये आए। तो प्लेस होल्डर में कैसे आएगा आइकन? ओके, प्लेस होल्डर में आप बताना चाहते हैं, तो प्लेस होल्डर आइकन में तो प्लेस होल्डर पे तो नहीं आएगा। अब अंदर में आप डाल सकते हैं, मैंने आपको बताया कि कैसे अंदर में आपको डालना है। अंदर, अंदर तो हो जाएगा सर, बट प्लेस होल्डर में नहीं हो सकता जैसे इन्होंने किया है ये। उन्हें प्लेस होल्डर में डाला है आई थिंक। ओके, हाँ, इन्होंने प्लेस प्लेस होल्डर होल्डर। में वो क्लास यूज करो, देखो ट्राई करो होता है या नहीं होता। क्या सर, मैं समझी नहीं। जो क्लास है जो कि अपने फॉन्ट ऐसे में यूज किए, जो भी क्लास यूज हाँ, करते हैं उनके अंदर जो इसको आप जैसे ओके कि ओके, समझ गई प्लेस होल्डर में सर। यूज करो, देखो ट्राई करो, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सर देखो। नहीं हो रहा था, वो मैंने करके देख लिया था। ओके, ये भी मैं बताऊंगा बाद में। ओके, ओके सर। एनी अदर डाउट? जस्ट अ मिनट सर, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए। हाँ सर, बस इसका थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि ये जो है, ये स्लाइडर HTML CSS में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके हो जाएगा? कौन सा, ये वाला जैसे ये कार्ड बनाते हैं? हाँ, ये वाला स्लाइडर। तो आपने इसको कार्ड बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड बना के उसको फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स डालो, हो जाएगा। नहीं कार्ड नहीं, बना, मूव। ओके सर, ठीक है। और एक और डाउट, ये जो बटन है ये जो सर्च है, ये डिव है या बटन है? में जो भी हो, तो इसमें बटन और डिव में फर्क क्या रह जाता है? हाँ, बटन में अगर बटन में जो होता है, हम उसको जैसे कि बैकग्राउंड में हम डिजाइनिंग करते बाय यूजिंग HTML और CSS डिजाइनिंग करते। हम्म। बट बटन में क्या होता है कि बटन बटन के जैसे काम करेगा। अगर डी वर्ब यूज करते, उसको बटन काम करने के लिए आपको डिजाइनिंग करना पड़ेगा। बट बटन ऑलरेडी डिफॉल्ट में हो गया है, जो भी आप सबमिट बटन, रिसेट बटन वो यूज कर सकते हैं, टाइप सबमिट टाइम रिसेट बोल के। बट अगर डीप यूज करते हैं, आपको आपको बनाना होगा वो जो बटन जैसे। ओके सर। सर तो बस मेरी यही डाउट थे कि इसे सेंटर में कैसे करना है, एक तो ये और एक प्लेस होल्डर का। ओके ओके, मैं बता दूंगा। ओके, बात। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एनी अदर डाउट गाइस, प्लीज आस्क मी। सर मेरी आवाज आ रही है? या आ रही है, बताओ। सर ये जो हम लोग फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब हम लोग बना रहे थे ना सर, लाइक जब आपका अगर आवाज हम थोड़ा लाउड आ रहा है तो अच्छी बात हो। मेरी आवाज आ रही है सर अभी? या अभी आ रही है। हाँ, तो सर अगर हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, अगर हमने उसमें कोई एक ब्लॉक फिल नहीं किया, अगर हम उसे सबमिट करते हैं, तो वो जो स्टार मार्क कंपलसरी वाला जो ऑप्शन होता है ना सर, वो कहाँ पे डालना चाहिए सर? वो कैसे आपको करना है ये बोल रहे हैं, या जैसे कि हम अगर सबमिट करते तो हमको जैसे कि रेस्ट्रिक्शन जो भी देता है वो वाला चाहिए आपको? हाँ सर, रेस्ट्रिक्शन लाइक विदाउट फिलिंग हम लोग वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। इट्स कंपलसरी, वो स्टार मार्क लगा होता है ना सर। हाँ, हम हाँ, इनपुट इनपुट टैग में अब रिक्वायर का एट्रीब्यूट मैंने बताया था, याद है आपको? यस सर, मैंने ट्राई किया सर, लेकिन मुझसे हुआ नहीं वो। ओके, एक बार अदर ट्राई करो, नहीं होता है तो मुझे बताओ, पर्सनली मैं बता दूंगा। ओके, बट मैंने यूज करके आपको दिखाया था यहाँ पे। अगर आप सर वो विदाउट, सर वो डिस्प्ले भी होना चाहिए सर, लाइक वो जो स्टार मार्क जब हम लोग इंसर्ट करते हैं वो आइकॉन, तो वो आइकॉन भी उसमें डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो भी मुझे आइकन करना था चाहिए सर। या एरर जो आता है उसका कंटेंट चाहिए आपको? सर एरर का कंटेंट भी और आइकन भी डिस्प्ले होना चाहिए सर फॉर्म में। वो जावास्क्रिप्ट में हो पाएगा, CSS में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंडीशन चाहिए उसको। अच्छा, तो ठीक वो है आपको सर। जावास्क्रिप्ट में बता दूंगा, ये नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट उसमें बता दूंगा कि अगर आप लॉगिन और जो पासवर्ड रहता है, अगर उसके अंदर आप अगर कुछ भी आप कंटेंट नहीं डाले, तो उसमें अंदर जैसे कि एरर आएगा, कैसे आएगा वो बता दूंगा मैं। ओके।
ठीक है सर। हाँ सर, मेरा बस वही मतलब जब मैं फॉर्म बना रही थी सर, मुझे वही मेन जानना था। हाँ, स्टार स्टार जैसे कि रेड कर सकते हो बाय स्पान यूज करके, उसका जैसे कि CSS दे सकते हो कलर रेड बोल के। हाँ। ओके, बट आप जैसे कि एरर आता है, एरर को आपको शो करना है, जैसे कि जब क्लाइंट जब कोई भी कंटेंट ना लिखे अंदर में, तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर, प्लीज़ ये वाला डाउट क्लियर कर दीजिएगा क्लास में। ये वाला, हाँ ये वाला तो मैं शो करूंगा आपको कि कैसे बनाना है हाँ, आपको। वो हम इफ एल्स कंडीशन लेके करेंगे, मैं आपको हाँ। बता दूंगा नेक्स्ट वीक में। ओके, ठीक है सर। सर मैंने व्हाट्सएप इमेज भी सेंड किया है सर, आप वो प्लीज़ मतलब मुझे वही जानना था सर। जो मैंने मेरा जो डाउट था पहले वाला, मतलब मैंने शुरू में जो पूछा था वो उसी इमेज के ऊपर ही मैंने पूछा था सर। ओके, 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 ये मैं बता हाँ, दूंगा आपको कल। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय। Any other doubt, guys? Please ask me in the chat box also. If no doubt, you can leave now. Thank you so much for your patience, for your listening in. Thank you so much, guys. Have a good day. Bye.